Bismillahirrahmanirrahim. The topic for my presentation is Alexa spying on us? So we will completely discuss about what is Alexa and how it is spying on us. So what is the background of this smart speaker or Alexa? Basically, one of the most significant and the successful voice technology innovations we have seen so far are the smart speakers, which include Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod, are increasingly becoming a trend in homes so far in the recent 2020 and 2021. Amazon's device team in January 2019 has announced that they have sold 100 million Alexa powered devices worldwide, which is a huge number. Similarly, in 2018, Google revealed that they sold more than one Google Home product every second. Cybersecurity critics have argued on this that always on devices like smart speakers of Amazon and the Google bring a significant threat to the privacy and the security because they were previously vulnerable to the security attacks, which allowed attackers to turn them into a wiretapping device as well. Moreover, smart speakers provide extra capabilities by allowing third-party developers to create applications that offer services. They can run if this then that automation applications that connects cloud services and users devices. So what are smart speakers? A smart speaker is a wireless voice command device with a virtual assistant offering multiple hands-free services with the help of activation words known as wake-up words or hot words. For example, in the case of Google, there is a wake-up word called OK Google. So smart speakers consist of one or more microphones which await the wake-up word, as I said it earlier, and the smart speakers are generally associated with numerous security and privacy concerns. We will briefly discuss in the upcoming lectures, in the upcoming slides. So here it comes the main point of security of smart speakers. The number one concern is the voice authentication. It had struggled in the past to recognize human voices. I can also discuss in the further slides that how it gets struggled, which prompted any audio within microphone range to send requests to the smaller speakers. In 2017, a cartoon which included repeated Amazon Echo and the Google Home commands had seriously wrecked some of the viewers' devices. And there is an attack, notable attack on voice authentication known as dolphin attack, which sends voice commands in the form of the ultrasonic sounds. Basically, these are the high frequency sounds that human cannot detect because it is out of the frequency decibel range of the sound. Second one after voice authentication is the wiretapping. Smart speakers are at risk of getting turned into wiretapping devices because security researchers from Tencent demonstrated. Tencent is a very uh, renowned company which have great contributions in the security of the IoT, demonstrated a security vulnerability at DEF CON that would allow attackers to take complete control of our device, which would enable them to listen our data or our private conversations. Other related security vulnerabilities were also discovered by the check marks and the MWR. The references of these papers are given in the references section. The third one is the voice commands. While the data sent to the cloud is encrypted, it does not prevent a network sniffer from the knowing that there is an interaction happening with smart speakers. Similarly, Google and Amazon allow users to manage and listen to their audio activity online, which adds a security risk in case if the account is compromised. We have to think it very carefully because if our account is compromised, then all our conversations with these smart speakers can easily leaked out. So now we will discuss the privacy of smart speakers. The first concern is the company monitoring. Major smart speakers employ staff to manually listen to consumers' voice commands to improve speech recognition technology, and it also bring major concern for their users as someone else can listen their talks. However, critics argue that contracts may have access to GPS coordinates, which can also leak our location coordinates.
In addition, companies collect personal information such as names, IP addresses, locations, and payments cards as well. The, the second concern in the privacy of smart speakers is the misinterpretation, which I told you earlier that I can discuss. For example, the research reports that the Google Home woke up for OK Bobo instead of OK Google. It's mean that there is some misinterpretation. For example, if you don't want to wake up your smart speaker, but accidentally you have spoke something relevant to OK Google, then it will automatically start listening to your commands. A case reported by Kiro 7 confirms the finding where a family in Portland had their private conversation recorded by Alexa and sent to random contact due to misinterpretation. So this is another very big concern related to our security. So there are a lot of related work have been done, and there are a lot of research papers have been published so far. For example, Pascal Kolsuk analyzed more than 2000 customers reviews and 850 tweets and found that enjoyment has the largest effect on the intention to use smart speakers. And most of the people do not have any concern related to their security. They said that we have just purchased these smart speakers for our ease and for our enjoyment and entertainment purpose. Other factors that strongly adopted the use of smart speakers were found to be usability, equality, and diversity of the product, and so on. The Zhang et al. Ran a questionnaire for 315 individuals in South Korea to study user intentions for adopting smart speaker. The author then tried to justify the finding with two possible explanations. The number one explanation is that privacy is the major viewed risk in the speaker adoption, which could have a negligible effect on the perceived value. The second explanation which an author gave is that the smart speaker users may not be knowledgeable of all the risk associated with the smart speakers, which I already told you in the last slide as well. So what are the privacy design recommendations which we can implement to further improve the security and the design concerns? The number one is improvement in muting. Amazon Echo and Google Home users cannot mute their smart speakers remotely, and it is quite surprisingly for me as well. For example, disabled users suffer from significant disadvantages for not being able to mute their devices remotely. Then changing privacy default settings. Google and Amazon store the audio history of their customers' commands by default. Companies should ensure that the privacy preserving settings are switched on by default. The third one is improvements to the audio logs. For example, users who do not want to have their audio activity stored would still need to delete their log from the device regularly, but there should be a private incognito mode like we have in Google browser should be available for them who do not want their voice commands to be recorded. Now we have to see what are the security design recommendations. These are the privacy design recommendations, and these are the security design recommendations. The first one is adding security layers to voice recognition. This is not true that they have not add any security, although they have added lot of security in their smart speakers, but they still have to add additional security layers to the voice recognitions, for example asking for memorable passphrases, which is likely to increase the security and the nurture trust as well. Then there is a offline capabilities should be available. For example, some of the modes should be available in the smart speakers which allow users that they do not connect their smart speakers to the internet. For example, they should have a Bluetooth availability. They should have some offline mode in which they can easily play musics and some other things related to this as well. So finally, we have to conclude this discussion. In my point of view, this discussion is quite subjective because the number of people who are using the smart speakers do not have any really concerns about the security. They said that they have not so many things to hide which they can talk related to the smart speakers. So if we look into the slide and understand what this slide say,
Then the smart speakers bring convenience and benefits to their users, but security and privacy concerns still damaging their market growth. This is the quite fact, because the maximum of the audience which are not purchasing their product, they are really looking for the security and the privacy concerns. Moreover, we found that the smart speaker users lack privacy concern towards smart speakers. That is the reason they are using for it, which prompts them to trade their privacy for convenience. However, various trigger points such as negative experience evoke security and privacy needs. When such needs emerge, existing security and privacy features were not found to be user friendly, which resulted in compensatory behavior. So the final wording about the Alexa spying on us is that we have to trade some of about our security related to speakers. For example, we have to trust on these big companies that they cannot leak our data. Otherwise, technology cannot be come into our life. So we have to trust on these companies. So these are all the references of the papers which I have used in these presentations. So thank you. Any questions? थैंक यू जी। एक तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी इलैबोरेट, वेरी नाइस। तो आपका फाइनल टेक क्या है इसके बारे पे? क्योंकि शुरू में तो आप जो है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस भी दे रहे थे, और एंड पे आपने जो कंक्लूड किया वो ये कंक्लूड किया दैट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज योर फाइनल टेक? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज होगी आपका कंक्लूजन सुन के कि आपका फाइनल टेक क्या है। मैम देखिए, ये इसी वजह से मैंने जब स्टार्ट किया था ना कंक्लूजन, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव था, क्योंकि यहाँ यहाँ पे जितने जो इसके यूजर्स हैं ना, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने अभी तक चीज नोट की कि वो तो कहते हैं कि हम लोग इसको अपनी ईज के लिए यूज कर रहे हैं और अपनी इंजॉयमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम इसको अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए किसी भी चीज को लिया जाए तो फिर तो हम इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। और अपने कैमरास भी यूज नहीं किए जाएंगे। और एक अदर साइड जो है वो ये कह रही है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, और हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है जिसको अगर हमारा कोई अकाउंट लीक हो जाता है तो हमारे लोकेशन कोऑर्डिनेट्स और हमारी जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि उस कंपनी के ऊपर के ये दो काफी बड़े नाम हैं जो कि हर टेक्नोलॉजी जो नई इनोवेशन आ रही है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये काफी टाइम से हैं और इन्हें आइडिया है इन चीजों का, और ये जो तमाम प्राइवेसी होती है उनका ख्याल रखते हैं। जो इनके, क्योंकि मैम एक मुझे अभी जहन से लफ्ज निकल गया, वो एक एब्रीविएशंस थी जिसमें प्राइवेसी कंसर्न्स का ख्याल रखना पड़ता है। जब प्रोडक्ट बनाई जाती है तो उसमें कुछ चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं कि हम इन इन चीजों का ख्याल रखेंगे यूजर की कॉन्फिडेंशियल चीजों का। तो मेरे ख्याल में हमें इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल करना चाहिए, और थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये चीजें हमारी ईज के लिए हैं। और जो मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेसी मोड दे दिया जाए, कोई ऑफलाइन मोड दे दिया जाए, कोई इसमें इनकोग्निटो मोड जिस तरह होता है, ऑफ प्राइवेट ब्राउजिंग वाला, म्यूट वाले जो रिकमेंडेशंस हैं, ये चीजें देनी चाहिए, तो इससे काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अपना फाइनल टेक मैं एंड पे दूंगी। सो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आपसे। आपने शुरू में कुछ, जब आप एलेक्सा की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो उसमें आपने इफ देन दैट ऑटोमेशन का जिक्र किया, तो उसकी कोई आप एग्जांपल दे सकते हो कि कोई थर्ड पार्टी ऐप इफ देन दैट एप्लीकेशन ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती है थ्रू एलेक्सा? मैम फॉर एग्जांपल जो आपके एसी लगे होते हैं तो हम उसके अंदर डिफरेंट, उसके अंदर कंडीशंस प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 डिग्रीज, और उसके साथ साथ अगर फैन भी एक्टिव हो तो हम उसको डिफरेंट कंडीशंस दे के हम ऑटोमेशन चीजें कंट्रोल करा सकते हैं कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो आपने अपना टेम्परेचर ये सेट करना है, फैन ऑफ कर देना है, और आपने चेक करना है कि कोई कमरे में मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मोशन नहीं हो रहा तो आप फिर फैन और अपना एसी दोनों चीजें कंट्रोल ऑफ कर दो। तो ये रियल टाइम में इफ देन दैट तो चल ही रहा होता है, क्योंकि
सारी चीजें ऑटोमेट होना जरूरी होती हैं अलेक्सा के लिए कि तमाम चीजें जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हों। फिर ठीक है। सिर्फ अलेक्सा तो अकेला कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ एलेक्सा तो अकेला कोई काम नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल मुझे मतलब ठीक बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा। ये जो आपने एग्जांपल दी, जो कि बिल्कुल वैलिड एग्जांपल है और बहुत अच्छी एग्जांपल है, कि कार्टून रिपीटिंग द एको वर्ड्स, तो उसकी वजह से वो बार बार जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से काइंड ऑफ एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक सा क्रिएट हो जाता है, कि वो बार बार वेकअप करता चला जा रहा है, जो उसकी बैटरी भी ले रहा है और वैलिड यूजर को टाइम नहीं मिल रहा। तो जी मैम। आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल है, या किसी ने कुछ पब्लिश किया हो कि इससे एक्चुअल सिनेरियो में क्या क्या हुआ या किस तरह हुआ? मैम इसका एक्चुअल सिनेरियो में तो कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं थी, लेकिन बार बार यही था कि वेकअप ऑटोमेटिकली हो रहा था, जिससे फॉर एग्जांपल आप इस टाइम नहीं चाह रहे कि आपकी रिकॉर्डिंग हो, लेकिन तो जो एकोस थी उस वजह से वेकअप बार बार हो रहा है। और बैटरी ड्रेन का भी जिक्र है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा जिक्र नहीं है। लेकिन ये इसको उसके थोड़े से कॉन्स में डिस्कस किया हुआ था कि ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं जिस चीज के ऊपर आप लोगों की नजर दौड़ाना चाह रही हूँ, जो 4 फीचर्स हमने पढ़े सिक्योरिटी ऑफ आईओटी में, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन था, ये जो सिर्फ एक कार्टून रिपीटिंग द एको वर्ड्स की एग्जांपल आपने दी, इसमें हमारी 2 फीचर्स वायलेट हो रहे हैं। एक हमारा अवेलेबिलिटी का फीचर वायलेट हो रहा है, और मैम एक हमारा ऑथेंटिकेशन का फीचर वायलेट हो रहा है। ऑथेंटिकेशन का फीचर किस तरह वायलेट हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑथेंटिक यूजर हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिरी है, जो आपके फोन्स में होती है या जो आईफोन में होती है, अगर मेरा आईफोन है तो वो सिर्फ मेरे हे सिरी से जागेगी, और किसी के हे सिरी कहने से नहीं जागेगी। जी तो मैम। अगर आपका जो 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 भी ये ऑटोमेशन डिवाइस है वो किसी रैंडम कार्टून की आवाज से जाग रहा है, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। एक तो बात उसमें प्रॉब्लम ये आ गई। और दूसरी, वो रिपीटेडली जब उसको वो कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी बैटरी ड्रेन कर रहा है। बैटरी ड्रेन कर रहा है तो वो उसकी अवेलेबिलिटी अफेक्ट कर रहा है, और अवेलेबिलिटी अफेक्ट करने का मतलब ये है कि वो सेंसिंग लेयर के ऊपर एक मेजर कनेक्शन या एक मेजर गेटवे को डिसेबल कर रहा है, यानी कि उस पूरे के पूरे घर की ऑटोमेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये बात आपको इस तनाजुर में समझ में आती है? यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन भी इसी के अंदर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक्चुअल यूजर उसको पता होना चाहिए कि ये ऑथेंटिक यूजर नहीं है, तो ये वायलेट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी है। बाकी लोगों को ये बात देखें, मेरा अभी ये 4 जो फीचर्स हैं आपको पढ़ाने का मकसद यही था कि आप इस डिस्कशन में ये तमाम चीजें इसके साथ रिलेट कर सकें, ताकि हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बार बार देख सकें कि सिक्योरिटी के फीचर्स कौन कौन से किस किस सिनेरियो में वायलेट होते हैं। तो ये बात सबको समझ में आती है कि जो इन्होंने ये एग्जांपल दी थी, इसमें हमारी अवेलेबिलिटी भी ब्रीच हो रही है और हमारी ऑथेंटिकेशन भी ब्रीच हो रही है। जी मैम। और मैम ये इसका ये भी है ना कि मैम ये एलेक्सा जो है तो ये मैम नेट पे काम करती है ना, जी तो जी, उसकी वजह से भी मैम ये अवेलेबिलिटी, अगर नेट ना हो तो फिर ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो फिर जब अच्छा आप मैम, ये आईओटी सवाल। की बात कर रहे हैं, तो जी जी। आईओटी में इंटरनेट इनेबल्ड होना तो शर्त है ना। हाँ जी। मैम और ये अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा मेरा ख्याल है कंफ्यूज कर रहे हैं कि हाँ जी, अवेलेबिलिटी से मुराद हमारे पास ये है कि इंटरनेट तो वो तो शर्त ही है। अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि जब आप उससे सर्विस की डिमांड करें ना, तो वो आपको डिनायल ऑफ सर्विस ना दे, हर यही वक्त आपके लिए अवेलेबल हो। तो ये अवेलेबिलिटी हाँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव में यूज होता एग्जैक्ट। अरसलान ने बिल्कुल ठीक कहा, इंटरनेट का होना तो शर्त है ना। जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं और इंटरनेट ही ना हो, तो ये तो ऐसी बात है कि मैंने गाड़ी चलानी है और पेट्रोल ही नहीं है। तो शर्त तो लाजिम है, इंटरनेट तो होना लाजिम है। इंटरनेट ना होना सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, वो आपका सिस्टम के कंपोनेंट्स ही पूरे नहीं है कि वो काम कर सके। जी, और किसी का कोई कमेंट इस प्रेजेंटेशन के बारे में? कोई अरसलान से सवाल? जी जी मैम, एक और है मैम क्वेश्चन अरसलान भाई से। जी जी। अरसलान भाई, ये बताए कि ये अमेजॉन एलेक्सा और अमेजॉन इको, इन दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंट क्या? जो आपके पास मुझे इसका एक्स्ट्रा तो नहीं पता है, तकरीबन सेम चीजें हैं। इसमें कुछ एक आध चीजों फीचर्स का फर्क है सिर्फ, लेकिन ये दोनों अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट स्पीकर्स ही आते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। एलेक्सा जो है वो पूरा का पूरा आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, जैसे आपके पास सिरी होता है, उसकी एक्सेस ज्यादा होती है और एको की एक्सेस कम होती है।